Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the class. Today we are going to talk about session 3, lecture number 3, code 8614, educational statistics. Educational statistics, lecture number 3, exploratory data analysis by Qasim Sajjad, PhD scholar. Learning objectives. After completion of unit, the student will be able to define bar chart and the purpose of bar chart, write characteristics, pros and cons of pictogram, explain histogram and draw a bell-shaped histogram, explain frequency polygon, design any 4 questions that answer using scattered plot, make pie chart and justify the criteria to determine whether pie chart is a right choice or not. These are some लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो बेसिकली हमने इस यूनिट के अंदर जो पढ़ना है, हमने यूनिट 1 और 2 के अंदर देख लिया कि एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके जनरल इंट्रोडक्शन. देन हमने देखा कि सम वेरिएबल्स और पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स. देन हमने डाटा के 4 देखे, नॉमिनल, मेजर्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. देन हम लोगों ने 2 एरियाज देखे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के, एक डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फ्रेंशियल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स. जब हम लोग रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा लेते हैं, तो फिर हम उनके डाटा को, उस डाटा को जब इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. फॉर रिप्रेजेंटेशन वी डू दीज थिंग्स. हम उनको बार चार्ट के ज़रिए, हम उनको पाई चार्ट के ज़रिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ज़रिए, स्कैटर्ड प्लॉट के ज़रिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द बार चार्ट. Introduction. Graphical representation of data is for the purpose of easier interpretation. Facts and figures as such do not catch our attention unless they are presented in an interesting way. Graphical representation of data is the most commonly used interesting modes of presentation. तो बेसिकली बताया गया है कि जो आपके पास डाटा होता है उसको क्या करते हैं, उसको इजी फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आने के लिए, उसको अच्छा सा कलरफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट है बार चार्ट. बार चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा यूज्ड टू विजुअली display to compare values. They are easy to create and interpret. Data for a bar chart are entered in the columns. Each numeric data value become a bar. The chart is constructed such that lengths of the different bars are proportional to the size of category. X-axis represents the different categories. The y-axis does have a scale and indicates the units of measurement. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जैसे बिल्कुल एक चार्ट बनाते हैं, तो एक ग्राफ बनाते हैं, तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. हम एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, कैटेगरीज को ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे अपने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को लेते हैं. और जब हम अपना डाटा पुट करते हैं तो वो डाटा बार्स की सूरत में आपके सामने बड़ा एक प्रोमिनेंट और इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में आ जाता है. लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ बार चार्ट फॉर एन एग्जांपल. हियर यू कैन सी on your screen bar chart example. You can see English, Urdu, Mathematics and Pak Study. तो हमने ये 4 सब्जेक्ट के अंदर देखना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही. तो हमने एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स को रखा, कैटेगरीज को, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने मार्क्स को रखा, जो कि 0 से 120 तक जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो 100 तक ही होंगे. तो वो 0, 20, 40, 20 के इंटरवल के साथ हमने 100 तक रखा और हमने कंपेयर किया. तो बेसिकली यहाँ पे हमें नज़र आता है कि बार चार्ट कंपैरिजन के लिए बहुत सूटेबल और बेहतरीन है और डाटा को बड़ा इजी और अंडरस्टैंडेबल करके दिखाता है. नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बार चार्ट. दे शो डाटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दे समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन ईजी एंड इंटरप्रेटेबल वे. The bar charts estimates can be made quickly and easily.
They are easily accessible to everyone. These were the pros, these were the advantages, these were the plus point of bar charts. Now we are going to talk about the cons of bar chart, disadvantages of bar chart. They have also limitations. They often require additional information. They can be manipulated to give false information. Pictogram. Now we are going to talk about pictogram. A pictogram is a graphical symbol that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. A pictogram may include a symbol plus graphic elements such as border, back pattern or color that is intended to convey specific information. तो बेसिकली पिक्टोग्राम के अंदर पिक्चर्स बनाई जाती हैं ताकि अट्रैक्ट भी किया जा सके और मैसेज भी convey किया जा सके. Let me read the third point and then we will look into the picture of a pictogram that is showing the laptops, and we will see how pictogram give us representation of the data. Third point is a pictogram is a kind of graph that uses pictures instead of bars to represent data under analysis. Pictograms form a part of our daily lives. They are used in the transport, medication, education, computers. तो जैसा कि थर्ड पॉइंट में भी अगेन बताया गया है कि इसके अंदर बार्स की जगह तस्वीर पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसको कलरफुल, इंटरेस्टिंग और रिप्रेजेंटेबल बनाया जाता है. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ द पिक्टोग्राम. Before looking into the picture, we must see the pros and the cons of pictogram. They improve comprehension of visual or literacy difficulties. They have the potential to be interpreted more accurately and more quickly than words. They can be recognized and recalled for better than words. On the other hand, it also have some cons of pictogram. Very few pictograms are universally understood. They have the potential for interpreting the opposite or often undesired meaning, which can create additional confusion. तो बेसिकली इसमें कुछ इश्यूज भी हैं जिनमें से दो बहुत मेजर हैं जो बताए गए हैं. एक तो ये यूनिवर्सली यू कैन से कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, कॉमन नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है यूनिवर्सली. और सेकेंडली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ये कन्फ्यूजन कॉज करता है. नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पिक्टोग्राम ऑन योर स्क्रीन. मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च. नाउ यू कैन सी 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च. नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो हमारे पास आए हैं, जनवरी में 25, फरवरी में 15 एंड मार्च में 20. तो हम इस डाटा को किस तरह शो करेंगे? ये एक जो लैपटॉप है इसके पीछे 4 लैपटॉप है तो ये एक 5 की रो है. तो हमारे जनवरी के अंदर 5 रोज है, मींस टोटल 25 लैपटॉप्स. फरवरी 3 है, मींस टोटल 15 लैपटॉप्स. एंड मार्च में 4 शो किए जा रहे हैं, मींस टोटल 20 लैपटॉप्स. Hope you just got the concept of bar chart and pictogram. Let's move to the histogram. A histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the numbers of data points that lie within the range value. A histogram looks similar to bar charts. The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount of data in the class. The higher the bar is, the greater the frequency of the data will be, in vice versa. The main difference between these graphs is the level of measurement of data. Bar graphs are used for data at nominal level of measurement. Very much simple. You can see in the picture bell shaped. ठीक है, तो आप बार्स की मदद से डाटा को शो करते हैं. एक्स एक्सिस के ऊपर आपके ग्रेड्स हैं, वाई एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो ये एक बेल शेप बना रहे हैं. यहाँ पे एक एडिशनल एक कॉन्सेप्ट आता है कि जाहिर है आप लोग एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए पहले से, लेकिन नहीं है तो मैं बताता चलूँ कि जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जो आप डेली लाइफ के अंदर क्वेश्चनर फिल करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है. एक इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, चाहे वो किसी भी वेरिएबल का हो, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है. तो जब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आइटम्स, उनकी जो टर्म यूज़ की जाती है आइटम्स की जाती है. तो एक इंस्ट्रूमेंट में जो आइटम्स होते हैं, हर आइटम की अपनी
डिफ़िकल्टी इंडेक्स होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो जब भी कोई डाटा लिया जाएगा, अगर तो वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो बेल शेप शो करेगा, ठीक है। आगे डिफ़िकल्टी इंडेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम उस की तरफ नहीं जाते हैं, ज़ाहिर है उस पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो असेसमेंट के अंदर आ जाता है। तो अ बेल शेप्ड पिक्चर शॉन बिलो यूजुअली प्रेजेंट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है ये नॉर्मली डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, देन मिड में जाके वो मीन पे जा रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है, देन वो वापस लोअर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तो आपका डाटा सारा नॉर्मल से पीछे है तो इसको कहते हैं राइट स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आपका डाटा नॉर्मल से आगे है तो इसे कहते हैं लेफ्ट स्क्वीड हिस्टोग्राम। मैं उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, राइट एंड लेफ्ट स्क्वीड हिस्टोग्राम। और अगर नॉर्मल रहता है तो उसके लिए भी एक टर्म यूज की जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ताकि मिक्स नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। The frequency polygon is as graph that displays data by using lines that connect points plotted for the frequencies at the midpoint of the classes. This graph is useful for understanding shape of distribution. They are good choice for displaying cumulative frequency distribution. A frequency polygon is similar to histogram. The difference is that histogram tends to be rectangles while a frequency polygon resembles a line graph. तो बेसिकली पॉलीगन के अंदर जब डिफरेंट आप अपने जो डाटा के पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं तो उनको लाइन की मदद से मिलाकर एक ग्राफ बना देते हैं, दैट इज अ वेरी मच सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एज यू कैन सी इन द पिक्चर। On x-axis we have interval of 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, and on y-axis 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आप अपने डाटा के मुताबिक x-axis और y-axis को नंबर्स वैल्यूज देंगे, then we will draw a graph. Scatter plots. A scatter plots is used to plot data in x and y plane to show how much one variable or data set is affected by another. अब आप यहाँ पे एक डाटा सेट को, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ एसोसिएट करते हैं और देखते हैं कि एक की वैल्यूज़ दूसरे की वैल्यूज़ को कितना इफेक्ट कर रही है। Points show the relationship between two sets of data. Points are called markers and position of these points depend on the values in the column sets on the x and y axis. तो वो कह रहे हैं जब आपने x axis पे फॉर एग्जांपल आपने x axis के ऊपर स्टूडेंट्स को रख लिया है और y axis के ऊपर उनकी अचीवमेंट को रख लिया है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट कितनी है इस तरह, या आप x एक्सिस पे अचीवमेंट, मोटिवेशन और एटीट्यूड को रखते हैं और y एक्सिस पे स्टूडेंट्स को रखते हैं। तो इस तरह आप वैल्यूज़ के मतलब जहाँ भी मार्क करेंगे वो मार्क, अगर आपने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा है मैट्रिक लेवल के ऊपर तो आपको ग्राफ बनाना आता होगा, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि आप उनकी वैल्यूज़ को वहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरह आप उनके दरमियान देखेंगे। तो ये इनको लाइंस के ज़रिए मिलाना नहीं होता है, बस मार्क करना होता है। वी विल सी इनटू द पिक्चर after this slide. And fourth point is scatter plot gives good visual picture of the relationship between two data sets. The relationship between two data sets is called correlation. So basically correlation के लिए सबसे जो suitable कोई ग्राफ है या रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरल फॉर्म में, that is scatter plot. Now you can see the name of student A to S और उनके अचीवमेंट के मार्क्स 95 हैं, मोटिवेशन के 50, एंजाइटी के 15 स्टूडेंट ए के। इसी तरह बी के 96, 84, 54, सी के 65, 46 एंड 25। इन द सेम वे बाकियों के भी हैं। तो आप देख सकते हैं जिनकी अचीवमेंट हाई है क्या उनकी मोटिवेशन भी हाई है, और एज कंपेयर टू अचीवमेंट एंड मोटिवेशन क्या उनकी एंजाइटी हाई है या लो है। सो जस्ट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन these variables, these data set, we draw example of scatter plots. Here you can see that
Blue points, blue dots are showing the values of achievement, while motivations are in reddish dark red color and anxiety in green color. Next is pie charts. A pie chart displays data in an easy pie slice format with the varying size. एक सर्कल होता है आपके पास, और आपने अगर छोटी क्लासेस में छोटे ग्रेड्स के अंदर फ्रैक्शन के सवाल पढ़े हों तो वहाँ पे भी एक सर्कल बनाया जाता है और उसके पीसीस कर लिए जाते हैं, स्लाइस बना लिए जाते हैं. अगर 5 आप लोगों ने बनाने हैं तो आप 5 स्लाइस कर लेंगे अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे किया जाता है. एक सर्कल 100% को शो करता है. अगर मैं बात करूं कि आपकी इस वक्त मौजूद जो क्लास है इसके अंदर 70% बॉयज़ हैं, 30% गर्ल्स हैं, तो हम एक राउंड लगाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे. उस राउंड को हम जब स्लाइस बनाएंगे तो 70% एक तरफ कर देंगे और 30% एक तरफ. और अगर हमने आप लोगों की एज देखनी है और हम कहते हैं कि आपकी एज जो 20 to 25 के दरमियान है वो 60 स्टूडेंट्स हैं 100 में से, और जो 25 to 30 हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल आर अबव 30. तो उसके लिए हम इस तरह बनाएंगे slices. The second point पढ़ रहा हूँ. The size of a slice tells how much data exists in one element. The bigger the slice, the more of data particular data was gathered and vice versa. जितना ज़्यादा डाटा होता जाएगा उसमें एंटर, उतना ज़्यादा वो स्लाइस बड़ा होता जाएगा, और जितना डाटा कम होता जाएगा स्लाइस छोटा होता जाएगा. Pie charts are mainly used to show comparison among various segments of data. When items are presented on a pie chart, it is easy to see which item has maximum frequency and which is not, or which item is the most popular and which is not. As you can see in the picture, I am giving you 30 seconds to observe that picture and clear your concept regarding pie charts. Let's move to the general rules for data presentation. When we are presenting the data, we need to keep it on our mind some rules. We need to follow some rules. We have some guidance for making a reasonable and decent presentation of the data. And the first rule is suitable title. Make sure that the appropriate title is given to the graph which indicates the subject of the presentation. Second, measurement unit. Mention the measurement unit in the graph proper scale to represent the data in an accurate manner. Choose a proper scale. अगर आप नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो स्केल ले रहे हैं तो जो भी आपका मेजरमेंट स्केल है आप उसके मेंशन करेंगे और अकॉर्डिंगली आप अपना ग्राफ चूज करेंगे. आपने पाई चार्ट लेना है, पॉलीगन लेना है, हिस्टोग्राम लेना है, बार ग्राफ लेना है, जो भी लेना है. इंडेक्स the appropriate colors, shades, lines, designs in the graphs for better understanding. तो इंडेक्स, इसको आसान अल्फाज में लेबलिंग भी कहा जा सकता है. यू नीड टू लेबल प्रॉपरली. अब आप कह रहे हैं स्टूडेंट मोटिवेशन रेड कलर का है और आप रेड को और डार्क रेड को मिक्सअप कर देंगे तो आपके जो डाटा है वो प्रॉपरली अपने रिजल्ट शो नहीं कर पाएगा. सो इंडेक्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डाटा प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, डाटा सोर्स. इंक्लूड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन wherever it is necessary at the bottom of the graph. तो ग्राफ के लास्ट में एज ए सोर्स आप बताएंगे कि डाटा कहाँ से लिया गया. Keep it simple. Construct a graph in an easy way that everyone can understand. और इतना आसान बनाएं ग्राफ कि सबको बआसानी समझ आ जाए. Neat. Choose the correct size, lettering, colors in such a way that the graph should be a visual aid for the presentation of information. Very much easy to you people, so you can understand it by yourself. Types of data presentation: line graphs, bar graphs, histograms, line plot. Line graphs are used to display the continuous data and it is useful for predicting the future events over time. बहुत आसान है. Bar graphs is used to display the category of data and it compares the data using solid bars to represent the quantities. Histograms
It represents the frequency of numerical data that are organized into intervals. Line plot, it shows the frequency of data on a given number line. X is placed above a number line each time when data occurs again. By reading these types of data presentation, you will be able to understand that if you have interval data, which type of data presentation you will use, and if you have nominal data, which type of data representation you will choose, and which one is more appropriate and more suitable. Next, frequency table. The number of pieces of data that falls within the given interval. Circle graphs, also known as pie chart. Third, stem and leaf plot. The data are organized from least value to the greatest value. The digits of the least place values from the leaves and the next place value digits from the stems. Box and whisker plot. The plot diagram summarizes the data by dividing into 4 parts. Box and whisker shows the range spread. रेंज मीन्स स्प्रेड. आपके पास डाटा है तो आप देखेंगे उसकी रेंज क्या है. ठीक है, मिनिमम मार्क्स अगर एक स्टूडेंट के 2 आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 37 आ रहे हैं आउट ऑफ 50, तो आपकी रेंज क्या है 2 to 37. एंड द मीडियन ऑफ द डाटा, जैसा कि आप लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन मॉड मीडियन आता है, तो आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और रेंज भी पढ़ा तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्प्रेड और मीडियन का. तो मीडियन क्या होता है कि आपकी मिडिल वैल्यू, आप अपने डाटा को ऑर्डर में लिख लेंगे और उसकी जो मिडिल वैल्यू है ना, सेंट्रल वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड मीडियन. नाउ रीड दिस क्वेश्चन, टेक अ नोटबुक and answer these questions on your notebook, so you can see how much this session was fruitful and understandable to you people. And if you couldn't answer any of the question, please drop it in the comment so I could answer you and you will be able to understand this unit. Thank you very much. Shukriya. If you have any question, please ask me. Thank you.